ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो थॉमस हार्डी नॉवलिस्ट जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ नावल्स हैं जिनको हम डिटेल में उनकी समरीज, उनके करैक्टर लिस्ट सारी जो है वो कवर करेंगे। तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इनकी कल हमने इस नावल की कल हमने जो है वो करैक्टर लिस्ट पूरी मैंने डिटेल में उसकी वीडियो अपलोड की थी, तो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि करैक्टर लिस्ट का पता होना चाहिए, करैक्टर्स का क्लियर होना चाहिए कि कौन से नावल में कौन से करैक्टर और कौन प्रोटोगनिस्ट है, कौन एंटागोनिस्ट है, क्या प्लॉट है नावल का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज नावल समरी, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। डिटेल समरी है ये। माइकल हेंचर्ड जो है ये प्रोटोगनिस्ट हैं इस नावल में। दिस नावल इज़ अबाउट रिग्रेट, और अपने पास्ट जो उनकी मिस्टेक्स हुई हैं उसको ठीक करने की कोशिश में ये नावल है। माइकल हेंचर्ड इज़ ट्रैवलिंग विद हिज वाइफ सूजन एंड डॉटर एलिजाबेथ जेन, looking for employment as a hay trusser. When they stop to eat, Hunchard gets drunk, and in an auction that begins as a joke turns serious, he sells his wife Susan and their baby daughter Elizabeth Jane to a sailor Richard Newson for 5 guineas. इम्पॉर्टेंट है कितने पैसों के लिए इसने बेच दिया था अपनी बीवी और बेटी को? 5 guineas के लिए। In the morning, Henchard regrets what he has done and searches for his wife and daughter. Unable to find them, he goes into church and swears an oath that he will not drink alcohol for 21 years. कितने साल के लिए? 21 ईयर, जितने साल का ये उस वक्त था। The same years he has been alive. After the sailor's death 18 years later, Susan and Elizabeth Jane see Hunchard। 18 साल बाद सेलर की डेथ हो गई। यहाँ इन्होंने मान लिया कि रिचर्ड जो है वो मर गया है। सूजन और एलिजाबेथ जो हैं वो हंचर्ड की तलाश में निकली। एलिजाबेथ जेन बिलीव्स ही इज़ मैरिडली अ लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव। एलिजाबेथ को लगा था कि जो वो सिर्फ इनका लॉन्ग लास्ट रिलेटिव है। दे अराइव इन कास्टरब्रिज एंड लर्न्स दैट हंचर्ड इज़ अ मेयर। Susan and Hunchard meet and decide that in order to prevent Elizabeth Jane from learning of their disgrace, Hunchard will court and remarry Susan as though they had met recently. Meanwhile, Hunchard has hired Donald Farfrae, a young Scotchman, as the new manager of his corn business. Elizabeth Jane is intrigued by Farfrae and the two begin to spend time together. Hunchard becomes alienated from Farfrae as the young man consistently outdoes Hunchard in every respect. जेलसी फैक्टर क्या है यहाँ पर एक डेवलप हो गया हंचर्ड में कि फारफ्रे जो है वो हर लिहाज में इसको टक्कर दे रहा है। कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो गया इनमें। ही आस्क्ड फारफ्रे टू लीव हिज बिजनेस एंड टू स्टॉप कोर्टिंग एलिजाबेथ जेन। सूजन फेल्स इन एंड डाई सून आफ्टर हर रीमैरिज टू हंचर्ड. After discovering that Elizabeth Jane is not his own daughter but Newson's, Hunchard becomes cold toward her. After Susan that Hunchard को ये सीक्रेट पता चला कि एलिजाबेथ जेन जो है वो इसकी बेटी नहीं है बल्कि न्यूसन की है, थ्रू अ लेटर के ज़रिए इसको ये पता चला था। Elizabeth then decides to leave Hunchard's house and live with a lady who has just arrived in town. और वो लेडी कौन सी? लोसीटा. The lady turns out to be Lucita Templeman, and a woman with whom Hunchard was involved during Susan's absence.
Having learned of Susan's death, Lucita has come to Casterbridge to marry Hunchard. While Lucita is waiting for Hunchard to call on her, she meets Farfrae, who has come to call on Elizabeth Jane. The two hit it off and are eventually married. Lucita और डोनर फारफ्रे जो हैं इन्होंने शादी कर ली. Lucita asks Hunchard to return to her all the letters she has sent him. On his way to deliver the letter, the messenger Job stops at an inn. The peasants there convinces him to open and read the letters aloud. Discovering that Lucita and Hunchard have been romantically involved, the peasants decide to hold a स्कीमेट्री राइड. नैन्सी एक करेक्टर था, कल मैंने करेक्टर लिस्ट में बताया था, नैन्सी मॉकरिज. ये इसने सारा कुछ ये प्लानिंग की थी. ये ह्यूमिलेटिंग परेड पोर्ट्रेइंग लुसीटा एंड हंचर्ड टुगेदर. द इवेंट टेक्स प्लेस one afternoon when Farfrae is away. Lucita faints upon seeing the spectacle and becomes very ill. Shortly after, she dies. While Hunchard has grown to hate Farfrae, he has grown closer to Elizabeth Jane. The morning after Lucita's death, Newson, who is actually alive, arrives at Hunchard's door and asks for Elizabeth Jane. Hunchard tells him that she is dead, and Newson lives in sorrow. Elizabeth Jane stays with Hunchard and also begins to spend more time with Farfrae. One day, Hunchard learns that Newson has returned to town and he decides to leave rather than another confrontation. Elizabeth Jane is reunited with Newson and learns of Hunchard's deceit. Newson and Farfrae start planning the wedding between Elizabeth Jane and the Scotsman. Hunchard comes back to Casterbridge on the night of the wedding to see Elizabeth Jane, but she snubs him. He leaves again, telling her he will not return. She soon regrets her coldness, and she and Farfrae, her new husband, go looking for Hunchard so that she can make peace with him. Unfortunately, they find him too late, discovering that he has died alone in the countryside. He has left a will. His dying. ओके, तो आज के नावल की ये सारी डिटेल समरी थी. आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई हो. ये इम्पॉर्टेंट नावल है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज. थीम इसका रिग्रेट है. ओके, अल्लाह हाफिज़. डू सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.